Hello all, welcome to the new session. So this session is about the Newton-Raphson method of iteration criteria. In this session, we are going to discuss the detailed step-by-step procedure to solve the numerical by using Newton-Raphson method in accuracy criteria. If the numerical is of accuracy criteria, how to solve the numerical by using Newton-Raphson method, we will discuss one by one. So as you all know, the Newton-Raphson method has two criteria. We can solve the Newton-Raphson method by using iteration criteria as well as a accuracy criteria. जैसे हमने लास्ट दो वीडियोस में देखा था कि बाइसेक्शन मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इटरेशन क्राइटेरिया की केस हमने देखा था और दूसरा हमने accuracy criteria का केस देखा था. So similarly here we have to calculate the roots of equation by using Newton-Raphson method. So सबसे पहले हम आज के सेशन में देखेंगे न्यूटन-रैप्सन मेथड से रूट्स ऑफ इक्वेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इटरेशन क्राइटेरिया यूज करके. So let's move towards the numerical directly. So here this is the numerical for Newton-Raphson method of iteration criteria. Now you know here if the numerical is of iteration criteria, the number of iterations are given in the numerical. So please first read the numerical carefully. This is the numerical here. So determine the root of equation f of x is equal to 0.51x minus sin x using Newton-Raphson method. Do three iterations. So here you can see the function is given in the numerical and the number of iterations are given in the numerical. Now as the Newton-Raphson method is an open method, so here only one initial guess is there, right? जैसे बाइसेक्शन के केस में हमें x1 और x2 की वैल्यू दी थी, तो जो भी आपका रूट ऑफ इक्वेशन आता था वो दो वैल्यू के बीच की कोई वैल्यू आती थी. So for bisection method, always the root of equation is situated between these two value of initial guesses. So here this is the open end method. So here only one initial guess is there, right? So the value of x1 here we have to assume because the initial guess value is not given in the numerical. तो चलिए हम numerical solve करेंगे तो आपको सारी चीजें अपने आप पता चल जाएगी. So here as always first write down the given data. So here first given, though the function is given in the numerical, so write down the f of x is equal to 0.51x minus sin x, right? Then n, that is number of iterations are 3, right? Now here the no initial guess is given in the numerical. So here for the Newton-Raphson method only one initial guess is required, that is x1. So here the x1 is not given in the numerical, so we have to assume the x1. So here you can write down like this: no initial guess is given, so assume x1 is equal to 1.6. हम 1.6 अज्यूम कर सकते हैं. आप चाहे तो आप 1 अज्यूम करो, 0 अज्यूम करो, 1.5 अज्यूम करो. मैं 1.6 अज्यूम कर रहा हूँ. Here we have to check whether this initial guess is correct or not, right? Like in case of a bisection method, we have a conversion condition to check whether the initial guesses are correct or not. So here in case of this Newton-Raphson method, again there is a conversion condition to check whether the assumed initial guess is correct or not, right? But जो बाइसेक्शन मेथड का जो कन्वर्जन कंडीशन था वो अलग था और न्यूटन-रैप्सन मेथड के लिए कन्वर्जन कंडीशन अलग है, right? So here after assuming the initial guess, here the initial guess is not given, that's why we have assuming the initial guess. We have to check whether this guess is correct or not, right? उसके बाद ही हम इटरेशन के ऊपर जाएंगे. Again remember one more important thing here. You can see the equation. In this equation the trigonometric term is given, right? So whenever there is a trigonometric term is given in the numerical, you have to convert your calculator into the radian while calculations, right?
आपको आपका कैलकुलेटर जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करना है जब भी आपको फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नजर आए, राइट। अगर आप ये रेडियन में कन्वर्ट नहीं करोगे और कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो पूरा आपने सही तरीके से भी सॉल्व किया होगा तो आंसर्स आपको गलत मिलेंगे। So here we have assumed the x1 is equal to 1.6. So we have to satisfy the conversion condition. So here we can write down like this: check initial guess. So the conversion condition for Newton-Raphson method is mod of f of x into mod of f double dash x divided by f dash x bracket square is less than equal to 1. ये conversion condition है for checking whether the initial guess is correct or not. You can write down like this here: conversion condition, right? So अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा f of x is there, f double dash x is there and f dash x is also there, right? So ये आपको कैसे कैलकुलेट करना है? f of x फंक्शन तो आपको न्यूमेरिकल में दिया है, राइट? सो वी हैव f of x फंक्शन ऑलरेडी। अब क्वेश्चन आता है कि f डैश x और f डबल डैश x कैसे कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, इसके लिए आपको सिंपल एक डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले आपको लिखना है जैसे इस तरीके से: f of x is given in the numerical, that is 0.51x minus sin x. So consider this is the equation number 1 जो कि हमें न्यूमेरिकल में दिया है। अभी f डैश x हमें कैलकुलेट करना है, f डैश x के लिए इक्वेशन करना है। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, f ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है। ये इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो इसको आप डेरिवेटिव लोगे तो आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगा, दैट इज द इक्वेशन फॉर f डैश x। सो अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको सिंपल डेरिवेटिव लेना है 0.51 विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर लेंगे आप तो 0.51 माइनस साइन x का होगा cos x। तो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन फॉर f डबल डैश x, आपको क्या करना है, ये f डैश x का जो इक्वेशन आपने बनाया है, जो आपने फाइंड आउट किया है, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। cos x का अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो वो होता है आपका माइनस, सॉरी वो होता है आपका साइन x, राइट। सो हियर यू कैन राइट डाउन लाइक दिस साइन x, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, राइट। सो इस तरीके से आपको f ऑफ x के लिए इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, f डैश x मिलेगा और f डबल डैश x मिलेगा। नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, f डैश x एंड f डबल डैश x। इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, डायरेक्टली इस कन्वर्जन कंडीशन में पुट करो और चेक करो कि वो लेस देन और इक्वल टू 1 आता है या नहीं। इफ the calculation of this term is less than or equal to 1, that means the conversion condition is satisfied. Whatever we have assumed the initial guess, that initial guess is correct, right? So अभी हमें 3 इक्वेशन तो मिल गए। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे अगर कैलकुलेट कर दूं, आप चाहे तो सेपरेट पेज पे जा सकते हो। तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे f ऑफ x कैलकुलेट करना होगा तो मैं सिंपल क्या करूँगा, by putting the value of x1 into this equation and calculate the f of x. So like this 0.51 into 1.6 minus sin 1.6, right? तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो वैल्यू मुझे मिलती है माइनस माइनस 0.1835, माइनस 0.1835 ये मुझे वैल्यू मिलती है f ऑफ x के लिए। सिमिलरली फॉर f डैश x अगर मैं कैलकुलेट करूं 0.51 माइनस cos 1.6, राइट। तो इसका आप कैलकुलेशन करो, वो
वैल्यू आपको मिलेगी 0.5391, 0.5391, right? Similarly for this last equation, that is f double dash x, so here only sin x is there, so you have to write down like sin x1 की वैल्यू हमने क्या assume की है 1.6, so sin 1.6 इसको आप कैलकुलेट करो, आपको मिलेगा 0.9995, राइट? तो देखो यहाँ पे हमें तीनों वैल्यू मिल गई, एफ ऑफ एक्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया, एफ डबल डैश एक्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया, और एफ डैश एक्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट? तो अभी सिंपल आपको क्या करना है, कन्वर्जन कंडीशन चेक करने के लिए ये जो वैल्यूज है ये आपको इस इक्वेशन में डालना है, कन्वर्जन कंडीशन में डालना है, और इसका कैलकुलेशन लेस देन और इक्वल टू 1 आता है या नहीं वो चेक करना है, राइट? सो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज, सो just put the value into the equation of conversion condition. So here you can write down like this. So here you have to just put the value into the into the conversion condition, like here f of x is equal to minus 0.1835 multiply by f double dash x is equal to 0.995 and divided by f dash स्क्वायर है तो 0.5391 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये आना चाहिए आपका लेस देन इक्वल टू 1. सो कैलकुलेट दिस एंड हियर द वैल्यू इज आफ्टर कैलकुलेशन द 0.63107 विच इज लेस देन और इक्वल टू 1, राइट? तो ये जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 1 आ गई. सो इसका मतलब है आपको लिखना पड़ेगा कन्वर्जन कंडीशन सेटिस्फाइड, कन्वर्जन कंडीशन satisfied, initial guess is करेक्ट, राइट? तो इस तरीके से आपको एक स्टेटमेंट वहां पे देना पड़ेगा आफ्टर सेटिस्फाइंग द कन्वर्जन कंडीशन. नाउ हियर दैट मीन्स द वॉट एवर गेस वी हैव अज्यूम, जो हमने 1.66 जो था वो अज्यूम किया था नंबर x1 इज इक्वल टू, वो इनिशियल गेस वो करेक्ट है, राइट? हम उसे कंसिडर करके जो नंबर ऑफ इटरेशंस हमें दिए हैं वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? सो आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट द इनिशियल गेस इज करेक्ट, directly move towards the iteration number first. So write down iteration number first. So here for the iteration number first, we have an initial guess that is x1 is equal to 1.6. So using Newton-Raphson formula, right? Using Newton-Raphson formula, here we have to use the Newton-Raphson formula for first iteration. The formula is x2 is equal to x1 minus f of x divided by f dash x. इतना सिंपल फॉर्मूला है, x2 is equal to x1 minus f of x divided by f dash x. So here put the value, x1 is 1.6, f of x ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है x1 के लिए, तो वो हम देखेंगे. f of x हमने कैलकुलेट किया था माइनस 0.1835, राइट? नाउ द f dash x is 0.5391, right? So after calculation, sorry, here minus sign is there, so after this calculation, right, calculate the value of x2. So x2 is 1.9403, right? So here after calculation of x2, for the next iteration, what you have to do here, you have to directly replace x1 by x2 for the next iteration. Here you can write down like this, x1 replace by x2, right? So
new guess is x1 is equal to 1.9403। सो हमने यहाँ पे क्या किया, प्लीज थोड़ा यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है। x2 की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली हमने रिप्लेस कर दी नेक्स्ट इटरेशन के लिए, मतलब x2 की जो वैल्यू आई है वो नेक्स्ट इटरेशन के लिए हम x1 कंसिडर करके दूसरा इटरेशन कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो हियर यू हैव टू राइट डाउन x1 रिप्लेस बाय x2। सो you can write down like this: new guess is x1 is equal to 1.9403 for next iteration, right? So now move towards the next iteration, that is iteration number 2. So here write down iteration number second, and for iteration number x1 is हमने कौन सा रिप्लेस किया था, 1.9403, जो कि लास्ट इक्वेशन में हमें x2 की वैल्यू मिली थी, वो हमने रिप्लेस कर दिया था। यहाँ पे सिमिलरली बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला हियर x2 इज इक्वल टू, आप चाहे तो x3 भी कर सकते हो यहाँ पे। सो आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं x3 बोल देता हूँ। x3 इज इक्वल टू x1 माइनस f of x divided by f dash x, right? So here now you can see x1 is changed here, right? So previous x1 आपने क्या किया था, इटरेशन नंबर 1 में 1.6 लिया था, बट सेकेंड इटरेशन में आपका x1 जो है वो चेंज होके रिप्लेस होके 1.9403 आ गया है। तो आपको f ऑफ x और f डैश x फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। आप यहाँ पे f ऑफ x1 लिख सकते हो, f ऑफ f डैश x1 भी लिख सकते हो। सो हियर, सो कैलकुलेट करो। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो f ऑफ x1 कैसे कैलकुलेट होगा, f ऑफ x1 के लिए हमारे पास इक्वेशन है, दैट इज 0.51, जो x1 की वैल्यू होगी 1.9403 माइनस साइन 1.9403। ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको f ऑफ x मिलेगा, और वो वैल्यू आती है आपकी 0.05704। Similarly, calculate the f dash x1. So f dash x1 is equal to, f dash x1 के लिए हमारे पास इक्वेशन है, देखो आप प्रीवियस देख सकते हो। f dash x1 के लिए हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है, that is 0.51 minus cos x. So similarly, you have to put this value into this equation, that is 0.51 minus cos 1.9403 and calculate this. So after calculation the value is 0.8711, right? So अभी सिंपल आपको ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करना है। x1 की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, that is 1.9403. So here write down x3 is equal to 1.9403 माइनस f ऑफ x1 कितना निकाला हमने यहाँ पे 0.05704, एंड f डैश x1 इज इक्वल टू 0.8711. So calculate the value of x3, right? So x3 is, after calculation, x3 is 1.8748, right? Now for iteration number third, again replace this x1 by x3, right? Replace x1 by x3. So new guess is x1 is equal to 1.8748 for the next iteration. Now here in this numerical only you have to perform the 3 iteration. So after third iteration जो भी आपकी वैल्यू आएगी x4 की, या जहाँ यहाँ पे न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला से जो भी आपकी वैल्यू आएगी, दैट इज द फाइनल रूट आफ्टर 3 इटरेशन. सो हियर इटरेशन नंबर थर्ड पे हम जाते हैं. सो नेक्स्ट इज इटरेशन नंबर थर्ड. हियर iteration number
third. Here we have a value for guess for iteration number 1 is x1 is equal to 1.8748 जो कि हमने लास्ट में ही रिप्लेस किया था, राइट. अगेन वी नो द फॉर्मूला फॉर न्यूटन रैप्सन मेथड. लास्ट टाइम हमने यूज किया था x3, तो इस बार हम यूज करेंगे x4. आप कंटिन्यूसली x2 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सो x4 इज इक्वल टू x1 माइनस f of x divided by f dash x1, right. Again here x1 की वैल्यू चेंज हो गई है, तो आपको फिर से f of x1 और f dash x1 कैलकुलेट करना पड़ेगा. हमें इक्वेशंस ऑलरेडी पता है. सो फॉर f of x हमारे पास इक्वेशन है 0. f of x1 हमारे पास इक्वेशन है 0.51 x1 that is 1.8748 माइनस साइन x का वैल्यू 1.8748, राइट. इसको कैलकुलेट करो. कैलकुलेट करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलता है 2.00323 इंटू 10⁻³ वैल्यू मिलेगा. सिमिलरली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f dash x1 by putting the value of x1 into this second equation. So here the second equation we have already calculated 0.51 minus cos 1.8748. इसको कैलकुलेट करो, आपको मिलेगा 0.8093, right. Now again use the Newton-Raphson formula. x4 is equal to x1 is 1.8748 माइनस f of x1 कितना है आपका 2.0023 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय f dash x is equal to 0.8093. So calculate the value of x4. So here the value is 1.8723. Now here the iteration number third is over. Now after iteration number third is over, here this is your final answer. This is the root of equation after 3 iteration, because हमें न्यूमेरिकल में मेंशन किया गया है कि you have to do up to 3 iterations only. मतलब जो हमें इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन के लिए आफ्टर 3 इटरेशन रूट इक्वेशन की वैल्यू है 1.8723. So here you have to write down like this: the root of equation after 3 iteration or after third iteration is 1.8723, right. So this is the final answer. This is the root of equation after third iteration, right. Because here you can see in the numerical, here you can see the function is given, and here do up to 3 iterations, right. So that's why this numerical is of iteration criteria. Remember again, in case of iteration criteria, the number of iterations are given in the numerical, and in case of accuracy criteria, the value of accuracy is given in the numerical. We'll discuss the Newton-Raphson method of accuracy criteria in our next session. So thank you for watching.